Hi everyone. So IPMAT, IIM Rohtak paper was conducted today, and as usual, it turned out to be a easy paper actually, and not exactly so easy. What is the feedback of the students uh, on the medium difficulty level side actually? But of course, if you look at the website of the IPM IIM Rohtak page, and definitely there was a surprise in the examination. Not for those who had taken the career launcher mocks, definitely, but those who have not, I'm sure they would have gone ahead with the sectional time limit plan, actually, which is never asked in the paper. And today was no surprise in that sense, actually. So they keep it every year for some reason, actually. So the exam was conducted from 9 a.m. today, and those who wanted to, those who were seeking admission for the IPM program at IIM Rohtak, the exam was for 2 hours duration till 11 a.m. And then those who wanted to also appear for the legal section for seeking admissions to the IPL program, their exam, the last section started a little late actually. So let's look at what has been the performance of the students today, what came in the paper actually. So when we talk about the paper today, in fact, the first IPM paper of the year, this is actually the IPM Indore paper is scheduled on 23rd, and JIPMAT will happen in June actually. So first of all, as expected, it was a computer-based test and no screen calculator. So this has been there actually. They do not provide on-screen calculator. But contrary to what they give on the website every year, that there'll be a sectional time limit of 40 minutes, there was no sectional time limit. And this is what we have been telling, that don't worry, the page probably they have not updated for a long time. Every year they have this mention of 40 minutes for each section, sectional time limit, just like it is in the IIM Indore paper, but वो नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, और हर साल यही होता है, कभी भी नहीं होता है, तो आज भी नहीं था. So what one could do is one could definitely shuffle within the section or between the sections actually. So one could easily play between the one could easily play with their strength actually. So which questions to pick first and solve them, so that one could maximize their score. ओवरऑल जो स्टूडेंट का फीडबैक है दैट दे हैव रेटेड दिस पेपर बिटवीन इजी टू मॉडरेट एक्चुअली एंड अक्रॉस द ऑल थ्री सेक्शंस एक्चुअली, not just about one section. In fact, students also found the logical reasoning paper slightly lengthy. So when they look at the paper, they realize that logical reasoning is slightly lengthy. So the smart work was to manage your time accordingly actually, which most of the students have done today actually. So let us look at each of these sections, and then we'll look at the cutoff, what could be the expected cutoff this year for 2024 actually. So on the expected lines, there were 40 questions in the quantitative aptitude, quantitative ability section. In the logical reasoning section, we had 40 questions, and verbal ability again had 40 questions, and the time limit for the total paper was 120 minutes. The marking scheme remained the same as always, +4 for every correct attempt, and there was a penalty for 1 mark in case in case an answer was incorrect actually. So that's a brief overview about. We'll look at section wise, and we'll also look at what has been the attempt of the students and what can be considered a good attempt in this paper. सो अगर हम क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत ही बैलेंस था, हर साल जैसा होता है वैसे ही था. तो अक्रॉस दी टॉपिक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे. नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहां से 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल डेटा बेस्ड ऑन दी feedback from more than 50 plus students we have spoken so far in the last 2 hours. So obviously we cannot write the examination because of the age factor, but yes, a lot of students had definitely mentioned that अगर quant की भी हम बात करते हैं तो easy to moderate difficulty level था. डिफिकल्ट तो डेफिनेटली नहीं था, क्वेश्चंस डुएबल थे. अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो पेपर आराम से कर सकते थे. तो नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चंस आए थे. टाइम वर्क की अगर हम बात करें, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें, तो ये दोनों एरियाज मिलाकर के 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. परसेंटेज से एक ही क्वेश्चन आया था आज. रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से सरप्राइजिंगली इस बार 3-4 क्वेश्चन पूछे गए. अलजेब्रा बेसिक था, 5-6 क्वेश्चंस वहां से पूछे गए. एज और कैलेंडर्स के क्वेश्चन यहां पर भी पूछे गए थे, और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में भी पूछा गया था. ज्योमेट्री, पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी आए थे. यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए. सो ओवरऑल जो ये सेक्शन था वो बहुत ही बैलेंस्ड रहा इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक. और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है फॉर दिस सेक्शन की, जो
क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन था वो इजी टू मॉडरेट रहा, सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, ऐसा नहीं था कि अगर मुझे क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत थी, अगर टाइम को ढंग से मैनेज किया है तो डेफिनेटली 30 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो रफली अराउंड 30 to 32 कैन बी कंसिडर्ड अ गुड अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन। देखो मैं गुड अटेम्प्ट की जब बात कर रहा हूं तो मतलब ये अटेम्प्ट्स डेफिनेटली पॉसिबल थे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने इससे ज्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली कुछ लोगों ने रिस्क लिया होगा। सो कुछ स्टूडेंट्स ने 34-35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ऑन एन एवरेज जिनसे बात हुई है। सो 30-32 डेफिनेटली गुड अटेम्प्ट था। अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी है तो इसको अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। सो अगर हम कौन की बात करते हैं 30-32 में अगर आपने 26-27 क्वेश्चंस अच्छे कर लिए तो आपका जो स्कोर है क्वांट में ही दैट विल बी अराउंड 108 to 112 एक्चुअली। सो इस फैक्टर को हम ध्यान में रख के चलते हैं व्हेन वी लुक एट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। सिमिलरली अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में एक कॉमन फीडबैक रहा स्टूडेंट्स का कि जो लॉजिकल रीजनिंग था दैट वाज स्लाइटली लेंथी। अगर हम बात करें तो जो ये पर्टिकुलर सेक्शन था एज कंपेयर टू द अदर टू सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेक्शन था ये डेफिनेटली थोड़ा सा लेंदी था, बट यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन था अक्रॉस द टॉपिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एज का जैसे मैंने बताया था। Quantitative aptitude also had questions related to age, whereas this particular section, logical reasoning, also had questions related to age. Clocks, calendars, series के questions इस बार कम थे. Last year we had 3-4 questions on series, but this time there were only 2 questions on series. Probability, dices वाले questions पूछे गए, cubes के ऊपर 2-3 question पूछे गए, sitting arrangement के 3 question आए थे, syllogisms के 3 questions थे. Verbal reasoning थोड़ा representation मिला इस बार. They had 3 to 4 questions according to the feedback from the student, 3 to 4 questions on statement conclusion. Strong and weak argument, एक question verbal ability में भी आया था, एक question यहाँ पर भी आया था, 2 question data sufficiency और 2 sets दिए थे और जो अगर एक बार क्रैक कर लिया तो इजीली उसको हम सॉल्व कर सकते थे। तो 7 क्वेश्चन अगर हम 2 DI सेट्स की बात करें तो दे वर कंप्लीटली डूएबल। सो डेफिनेटली सेट्स को आराम से सॉल्व करना था। सो होल थिंग अबाउट व्हेन रियलाइजिंग कि जो पेपर थोड़ा सा लेंदी रहा है तो द होल आइडिया वाज कि उसको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना था फ्रॉम अक्रॉस द अदर 3 सेक्शंस एंड देन वन कुड हैव इजीली सॉल्व। इसमें अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इट्स वेरी सिमिलर टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। तो यहाँ पर भी देखो देयर कुड बी वेरिड रिएक्शंस अक्रॉस द पेपर, बट प्लीज अंडरस्टैंड 15,000 स्टूडेंट्स टेक द पेपर व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पर भी 30 to 32 क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से किए हैं तो ये डेफिनेटली गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और यहाँ पर भी जो स्कोर होगा, मैं एक्यूरेसी लेवल को देख करके बात करूं तो 118 से 112 स्कोर, 108 से 112 का स्कोर डेफिनेटली पॉसिबल दिखता है यहाँ पर। ओवरऑल अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं। वर्बल एबिलिटी में 2 पैसेजेस आए थे, एक पैसेज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर था, एक पैसेज ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड था। टोटल 7 to 8 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, एक चीज यहां पर थी कि जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स को थोड़े से डिफिकल्ट लगे। सो वोकैबुलरी एनीवेज इज अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ, सो थोड़ा सा उनको मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का लगा। यूजुअली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएम एग्जामिनेशन, जो फेयर होता है वो मैथ्स को लेकर होता है, इंग्लिश को नहीं होता है। Students find themselves very comfortable with this section, थोड़ा एक्स्ट्रा समय भी दे देते हैं, but they found today vocabulary to be slightly on the moderate side of the difficulty level. But यहाँ पर भी if you look at the focus when it comes to 32 questions out of the 40 questions that covered grammar and vocabulary, तो फेयर एम्फेसिस दिया गया था ग्रामर और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस को, एंड दिस हैज बीन द ट्रेंड ईयर आफ्टर ईयर एक्चुअली। सो यूजुअली 8 to 10 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रिमेनिंग 30-32 क्वेश्चंस हमेशा से ही ग्रामर और वोकैब के रहे हैं। इडियम्स के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस थे, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, पैराजम्बल्स के कुछ क्वेश्चंस थे, 2 शॉर्ट पैसेजेस, वी कांट कॉल देम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 बहुत ही शॉर्ट पैसेजेस और उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑड वन आउट रीजनिंग के बजाय यहाँ पर पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस दिए थे, और वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करीब 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ओवरऑल द फोकस, द एम्फेसिस वाज एज यूजुअल ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी, बट यहाँ पर डिस्पाइट द वोकैबुलरी कमिंग ऑन द स्लाइटली moderate side of difficulty, still यहाँ पे 32-33
attempt can be considered a good attempt. Actually, it's all again was time management thing basically, and most students were able to do that. So usually अगर हम बात करें जो लोगों का overall attempt दिख रहा है, majority of the students have done 90 plus attempts over here. 90 to 100 का range है, 90 to 100 का रेंज है स्टूडेंट्स का, जो मेजॉरिटी का फीडबैक है कि 90 to 100 ही कर पाए, 100 प्लस बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए हैं. सो जो मेजर फीडबैक है, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है ओवरऑल अक्रॉस द पेपर, 90 to 100 क्वेश्चंस they have attempted. So when we look at the accuracy level, एक अच्छा स्कोर 350 प्लस के ऊपर होना चाहिए. And if we consider all the factors and then we look at the cutoff for this year, सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर कट ऑफ्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट एट प्रेजेंट इज जस्ट बीन 2 hours द एग्जाम हैज गॉट ओवर. सो एट प्रेजेंट इट लुक्स लाइक कि इस बार, लास्ट ईयर दिस वाज 409 इन 2023. बट एक चीज भूलना नहीं है, वी शुड रिमेंबर द फैक्ट दैट इफ यू कंपेयर the IPM Rohtak cutoffs over the years, and especially considering 22 and 23 में one point which most of the people did not notice. There were two things which happened in 2023. One, definitely the paper was easy, no doubt about that, as compared to what has come today. But at the same time, last year, what IIM Rohtak did was, compared to the previous years, they reduced the number of calls for the second stage. So पहले 2022 में अगर देखा जाए तो 1000 plus, around 1200 students got calls for the second stage, which is personal interview, and through which the final merit list is prepared. But last year, if you look at, it was around 700, some 700 plus students only got. तो जो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था लास्ट ईयर, जो कट ऑफ ब्रीच हुआ था 400 के बैरियर को आउट ऑफ 480. तो एक फैक्टर ये भी था कि नंबर ऑफ कॉल्स को रिड्यूस किए गए थे. अब इस बार दोनों सिनेरियो होने के चांसेस हैं. हो सकता है नंबर ऑफ कॉल्स को बढ़ाए जाए, या हो सकता है नंबर ऑफ कॉल्स जो 2023 में थे वो वहीं पर रहे. 700, 715, 420 students might get a call from across all the categories combined. But anyway, at this juncture, with exam just getting over 2 hours ago, and based on the so far the students' feedback which is continuously pouring in, the expected cutoff for the general category could be around 370. There could be a variation of plus 10 or minus 10, but it is expected that the cutoff for 2024, when it comes to IPM program for the IIM Rohtak paper, that could be for a general category 370, 380 के आसपास होना चाहिए. EWS कैटेगरी 350, 355 के आसपास होना चाहिए. जो नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका कट ऑफ 320 प्लस हो सकता है. शेड्यूल कास्ट 260 प्लस के आसपास होना चाहिए. लास्ट ईयर 276 था. 190, 201 था लास्ट ईयर. 190, 195 is what we can expect at this point of time. And PWD category with limited seats, the cutoff might be around 222 to 225. So ये जो cutoff है फिलहाल, that is based on the feedback which has poured so far from the students. Continuously we are getting the feedback. So that was the entire story of the IPM IIM Rohtak, IPMAT IIM Rohtak examination today on 18th of May. Next is definitely one of the biggest examination for you guys, that is IPMAT by IIM Indore, which is scheduled on 23rd from 2 to 4 p.m. So next 4-5 days, just go ahead, work on your basics, revise, keep on revising, and write just 2 mocks. Don't write too many mocks. Maybe today or tomorrow take the first mock, and after a gap of 1 day take the another mock, and just revise your actually. So that is what I would say, and we'll catch up again on 23rd evening with the analysis for the paper on that day. And definitely I think you enjoyed doing the paper today, and that is what you should be doing with the every paper actually. So 2 more critical exams coming up. One is definitely the IPMAT by IIM Indore on 23rd of May, and on 6th June you will have JIPMAT for admissions to the IPM program at IIM Jammu and IIM Bodh Gaya. So that's all the story for today. And just my suggestion would be, abhi cutoff ka chinta mat karo. Just go ahead and prepare for the next set of examinations which are coming your way. This can wait, and once the exams get over, start working on your next stage when it comes to the IIM Rohtak and IIM Indore actually. So all the best to each one of you actually, and sabhi students ko all the best kahunga from the behalf of entire career launcher team.
Just go ahead, revise, keep calm, and try to enjoy the examination. That's how you score in the examination. Thank you so much for joining in, and we'll catch up with you on 23rd of May evening after the IIM Indore paper gets over.